हाई चैंपियंस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो सबको पता है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट? सेकंड इज sec square theta minus tan square theta equal to 1, and third is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. ये तो बेसिक आइडेंटिटीज है। इसके ऊपर से और कौन कौन सी आइडेंटिटीज निकलती है? तो वी कैन से दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Also we can write sin theta equal to under root 1 minus cos square theta. This will be plus or minus, but you don't have to concern with negative, so we will consider only positive sign. ये आया. And cos theta, this implies cos theta equal to under root 1 minus sin square theta. Here sec square theta equal to 1 plus tan square theta and tan square theta equal to sec square theta minus 1. See, sec square theta equal to 1 plus tan square theta, and tan square theta नेगेटिव है तो उस साइड जाएगा, तो sec square theta minus 1 is tan square theta. Similarly, we can write sec theta equal to under root 1 plus tan square theta. This will also be only positive. प्लस माइनस दोनों होगा, वी हैव टू कंसिडर ओनली पॉजिटिव. एंड हियर tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. हियर ऑल्सो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा minus 1. This implies cosec theta equal to under root 1 plus cot theta and cot theta equal to under root cosec square theta minus 1. ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज याद होगी तो ही आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, फास्टली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम एग्जांपल्स यूजिंग दिस आइडेंटिटीज. Prove that under root sec square theta plus cosec square theta equal to tan theta plus cot theta. अब हमें यहाँ RHS में tan theta plus cot theta लाना है और LHS में sec square theta plus cosec square theta है. sec square theta की आइडेंटिटी हमारे पास tan के फॉर्म में है और cosec square की भी आइडेंटिटी tan square cot square के फॉर्म में है. लेकिन अगर हम वो यूज़ करते हैं तो we'll get 2, 1 plus tan square plus 1 plus cot square, that will be 2 plus tan square plus cot square. जो 2 अनवांटेड है, यहाँ हमें चाहिए नहीं, so we will not use that identity. LHS equal to under root sec square theta plus cosec square theta. So I'll convert it in sin cos. Under root sec is 1 upon cos, so 1 upon cos square theta plus cosec is 1 upon sin, so it is 1 upon sin square theta. Now taking LCM, sin square theta plus cos square theta upon sin square theta and cos square theta. This equal, as we know, sin square theta plus cos square theta is 1. This is sin square theta, cos square theta. So this will be 1 upon sin theta into cos theta, right? Now we have to bring tan theta plus cot theta. You can do one thing, LHS को इसको नंबर 1 दे दो और RHS को भी सॉल्व करके नंबर यही ले आओ, नंबर 2 दे दो. बाय 1 and 2 वी कैन से LHS इक्वल टू RHS, वो भी एक होता है. अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विथ LHS. ये 1 को हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा upon sin theta plus cos theta, sin theta into cos theta as it is. So this upon this, sin square theta upon sin theta cos theta plus cos square theta upon sin theta cos theta.
This sin will be cancelled, this cos will be cancelled. So I am getting sin theta upon cos theta plus cos theta upon sin theta, and as we know sin theta upon cos theta is tan theta and cos theta upon sin theta is cot theta. Therefore LHS equal to RHS. Proven. Next question. Prove that sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta. So LHS equal to sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square. We'll convert it in sin cos, cosec and sec. Sin square theta a plus b whole square plus cosec square theta plus 2 times sin theta into cosec theta plus this equal to this, and cos theta plus cos square theta plus sec square theta plus 2 times cos theta into sec theta. This much is this, a square plus b square plus 2ab. Now we will take sin square theta plus cos square theta together, this and this, plus cosec square थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी दोनों लिख लिया. अब ये प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू, इन प्लेस ऑफ कोसेक थीटा आई कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू 1 upon cos theta, sec theta is 1 upon cos theta. Sin will be cancelled, cos will be cancelled, and this equal to 1 plus, in place of cosec square I can write 1 plus cot square theta plus, in place of this equal to this, in place of sec square theta I can write 1 plus tan square theta, this equal to this, plus this 2 plus 2, that is 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 is 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus tan square theta plus cot square theta, that is equal to, therefore LHS equal to RHS, proved. Next question. Prove that tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A, and we have to bring 1 plus cosec A into sec A. तो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे या फिर cot में कन्वर्ट करेंगे LHS को. LHS इक्वल टू tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A. दिस इक्वल टू tan A, cot A को tan में कन्वर्ट कर देती हूँ 1 upon 1 minus 1 upon tan A. Cot A and tan A are reciprocal of each other, plus this is 1 upon tan A numerator upon 1 minus tan A. ये हो जाएगा tan A upon, taking LCM, tan A minus 1 upon tan A, जो numerator, denominator will become numerator. This tan A will go in numerator. So tan square plus 1 upon this will be in denominator, tan A into 1 minus tan A. Now these two are same, only difference is in sign. So taking LCM, tan square A into tan A, this will be multiplied here, plus 1, not plus 1, this is minus 1, because here we will, or we can increase one step. Tan square A upon tan A minus 1 minus
tan a 1 upon tan a into 1 tan a minus 1. टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, ये माइनस हो गया. अब ये दोनों मैच कर गया. सो दिस विल बी टेकिंग एलसीएम tan cube a, tan square a into tan a, these two are same, minus 1 upon tan a into tan a minus 1. Now apply identity a cube minus b cube. A minus b one bracket, tan a minus 1, another bracket, a square plus ab plus b square. So a is tan a, so tan square a plus tan a into 1 is tan a, or plus b square is 1 square is 1 upon tan a into tan a minus 1. This will be cancelled. क्या बच गया? tan square a plus tan a plus 1 upon tan a. हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो ये कैंसिल होने पर 1 आएगा, तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं. So tan square a upon tan a plus tan a upon tan a plus 1 upon tan a, that is equal to a कैंसल, a कैंसल, ये 1 आ गया, ये हो गया tan a प्लस ये हो गया 1 upon tan a is cot a, और ऐसे भी चलेगा, tan a plus 1, right? Now we have to bring cosec a into sec a. So convert it in sin cos. This equal to sin a upon cos a plus, this will be cos a upon sin a because it is in denominator. Cos a upon sin a plus 1. So taking LCM, sin square a plus cos square a upon sin a cos a plus 1. This equal to sin square a plus cos square a upon sin a cos a plus 1. That is equal to 1 upon sin a into cos a plus 1, and 1 upon sin a is cosec a, 1 upon cos a is sec a plus 1. Therefore LHS equal to RHS. Proved. Next question. If tan theta plus sin theta is m, tan theta minus sin theta is n, show that m square minus n square equal to 4 times root mn. M square LHS equal to m square minus n square. Taking, let me write data first. Tan theta plus sin theta equal to m. Tan theta minus sin theta equal to n. This is given. Now LHS equal to m square minus n square, that is equal to tan theta plus sin theta whole square minus tan theta minus sin theta whole square. You can use a square minus b square, otherwise you can use a plus b whole square minus a minus b whole square. So this will be tan theta plus sin theta plus tan theta minus sin theta. I am using a square minus b square, considering these as a, these as b. So a plus b, another bracket, a minus b. Tan theta plus sin theta minus tan theta and minus minus plus sin theta. This is equal to sin theta will be cancelled. So it is 2 times tan theta into here tan theta will be cancelled, 2 times sin theta. That is equal to 2 times sin theta into tan theta, or we can replace tan theta as sin theta by cos theta. That is equal to 2 times
sin square theta by cos theta. This is number 1. Now we'll solve RHS. RHS equal to 4 times root mn. That is equal to 4 times tan theta plus sin theta into tan theta minus sin theta. This will be 4 times again a plus b a minus b, that is tan square theta a square minus b square into sin square theta. This equal to 4 times under root sin square theta by cos square theta minus sin square theta. This equal to 4 under root, taking sin square theta common, 1 upon cos square theta minus 1. This will be 4 times root, or we can take sin square theta outside. Sin square theta का root हो जाएगा sin theta. Under root 1 minus cos square theta, taking LCM here, upon cos square theta. This equal to 4 times sin theta under root 1 minus cos square is sin square theta upon cos square theta. Here we have to mention the identity reason, that is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Because in place of this I wrote sin square theta, so we have to mention the reason. So this equal to 4 times sin theta into again sin theta by cos theta, that is 4 times sin square theta upon cos theta. This is number 2. Both are same. 4 times. This is 2 2s are 4. 2 2s are 4. Therefore, by 1 and 2, LHS equal to RHS. Next question. Prove that cot A plus cosec A minus 1 upon cot A minus cosec A plus 1, and we have to bring 1 plus cos A upon sin A. LHS equal to cot A plus cosec A minus 1 upon cot A minus cosec A plus 1. यहाँ पे cot cot cosec cosec 1 1 डिफरेंस इज इन साइन ओनली. तो इसे हम क्या करेंगे, विल रिप्लेस दिस 1, नीचे एज इट इज रखो cot A माइनस cosec A प्लस 1, ऊपर में cot A प्लस cosec A. हमारे पास आइडेंटिटी है cosec square theta minus cot square theta is 1. So in place of 1, I am writing cosec square A minus cot square A. Right? We'll mention the reason. Cosec square theta minus cot square theta equal to 1. This equal to cot theta, cot A plus cosec A minus, this is A square minus B square, so cosec A plus cot A, another bracket cosec A minus cot A, right? A square minus B square is A plus B, A minus B. Upon denominator will be same as above. Now taking this common, cot A plus cosec A, cot A plus cosec A. So cot A plus cosec A taking common, यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 1 माइनस cosec A माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस cot A अपॉन cot A minus cosec A, denominator is same as above. Now these two are same, cot A positive,
cosec A negative, plus 1, so this term will be cancelled. So it is cot A plus cosec A. अब हमें क्या लाना है, साइन कॉस का फॉर्म. सो दिस इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ कॉस, कॉट cos A upon sin A plus cosec is 1 upon sin A, taking LCM, cos A plus 1 upon sin A, same as RHS, therefore LHS equal to RHS. Proved. Next question. Prove that this equal to this. LHS equal to 2 times sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta minus 3 times sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta plus 1. इसको लाना है 0. 6 पावर देख के कुछ आइडिया आता है कि ये क्यूब की आइडेंटिटी हो सकती है, और हमारे पास साइन कॉस है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 ऑल्सो. सो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो गया साइन रेस टू 6 एंड कॉस रेस टू 6 माइनस 3 टाइम्स साइन रेस टू 4 इज साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर plus cos raised to 4 is cos square theta square plus 1 as it is. Now apply identity a cube plus b cube. A is sin square theta, b is cos square theta. So a cube plus b cube is a plus b, that is sin square theta plus cos square theta, another bracket a square minus ab plus b square. So a square is sin raised to 4 theta, sin square theta square plus or minus sin square theta cos square theta plus cos square theta square. Right, curly bracket. This is. So this equal to this much. A cube plus b cube is a plus b, another bracket a square minus ab plus b square. Minus 3 times, now a square plus b square, apply identity, a plus b whole square minus 2ab. So sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 times ab is 2 times sin square theta cos square theta and plus 1 as it is. This equal to, as we know, this is 1. This is sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta minus sin square theta cos square theta, right, minus 3 times, this is again 1, minus 2 times sin square theta cos square theta plus 1. This equal to 2 into, applying again sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 sin square theta cos square theta. ये हो गया minus sin square theta cos square theta. Minus 3 into 1 is 3, minus minus plus 3 to the 6 sin square theta cos square theta and plus 1 as it is. This equal to, this is 1, so 2 into 1 minus 2 times sin square theta cos square theta minus 1 times sin square theta cos square theta is minus 3 times sin square theta cos square theta. Plus minus 3 plus 6 times sin square theta cos square theta plus 1. So this will be 2 minus 6 times sin square, 2 3s are 6,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 plus 6 times sin square theta cos square theta plus 1 minus 6 times plus 6 times will be cancelled. 2 minus 3 plus 1, 3 minus 3, that is equal to 0. Therefore, LHS equal to RHS. Proved. Last question. If sin theta plus cos theta equal to P, sec theta plus cosec theta is Q, we have to show this. So let us write data first. Sin theta plus cos theta equal to P and sec theta plus cosec theta equal to Q. LHS equal to Q into P square minus 1. इसको लाना है 2P. So this equal to Q is sec theta plus cosec theta into P square is sin theta plus cos theta whole square and minus 1, right? So we'll convert this in sin cos, 1 upon cos theta, 1 upon sin theta, cosec theta is 1 upon sin, sec is 1 upon cos, into this is sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta minus 1. Taking LCM, sin theta plus cos theta upon sin theta cos theta. This will be 1 minus 2 times sin theta cos theta minus 1, 1 will be cancelled. This equal to sin theta plus cos theta upon sin theta cos theta into minus 2 plus 2. This is plus. 1 plus, this is plus, 2 times sin theta cos theta. Sin theta cos theta will be cancelled. So I am getting 2 times sin theta plus cos theta, that is equal to 2P. Now I use this identity here. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. You have to mention reason, right? Therefore, LHS equal to RHS. Proved. मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा. हर एक वेराइटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.